Hi friends, welcome back to my channel. Thank you for joining me today. So these are the prints I saved recently for my drawing practice, and now I'm going to choose from these three prints. Yeah, and I'm going to choose I think the second one because I love the colors and I love the tones in this second reference. That's why I will go with this. So let's start. फर्स्ट जो है मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ. I'm using a very easy guidelines to draw a eye. Yeah, which is a very easy guidelines by the way. You should use this. Yeah, and सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद जो है सर्कल को फोर इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है टू फाइंड द सेंटर पॉइंट वेयर वी विल क्रिएट द आइरिस. बट इन दिस रेफरेंस इमेज यहाँ पर जो है आइरिस टूवर्ड्स थोड़ा सा टर्न है लेफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से हमें इस गाइडलाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. वी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर, we will have to create a slightly curved line. So yeah, like this. So यहाँ पर जो है एक curved line draw करने की पड़ेगी instead of straight. After doing just little modification in the guideline, you will find the point where we are going to place the iris. And inside the iris, I'm creating another circle which is going to be the pupil of the eye. Yeah, and now the circle game is end now, and I'm moving towards the eyelids. अगर आपके रेफरेंस में जो आइरिस है वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे है, यू जस्ट डोंट नीड टू मॉडिफाई दिस गाइडलाइंस. या so yeah, here is our outline is ready, and I'm moving towards the shading part. I start with the basic shading. I'm using F pencil, create the first layer of shading, then I will blend it with the soft paintbrush. Then I took a little darker pencil HB to shade the upper part of the iris, and then I will blend it with the blending stump. Here you might thinking why the upper part of the iris is little darker than the lower part. Here's a simple reason behind this, because the light is coming from the top side. That's why the eyelids creates the shadow on the top of the iris. Then now I'm using 4B pencil to create the edges of the iris. Um, Please make sure that the edges are soft. I want you to please zoom your reference image and look closely that the edges are soft. To make your edges more soft and looks natural, make sure that you are using a blending stump to blend the edges, and please do not apply too much pressure on the pencil. I do usually use 8B pencil for the pupil, which is the darkest part in the whole eye. That's why I'm recommending you to use softer pencils like 8B or 9B for the pupil. Then I take a little softer pencil 3B and start creating little structural spokes coming from the edge of the iris. Then I go to the middle part and finally around the pupil. For creating this texture of the iris, I want you to just watch your reference photo carefully because every single iris is different. Then I will blend the texture with the soft paint brush because I don't want the texture to be disappear. That's why I'm not using blending stump. Then I take a 4B pencil and darken the edge of the iris. Then I will blend the edge with the blending stump because I want to create the smooth transition between the eyeball and the edge of the iris. Here I'm using an ordinary eraser to create the highlights in the iris. You can use any eraser, whatever you have, a pencil eraser or a mono eraser or an ordinary eraser. Also, I recommend to use a sharp pencil to create very thin lines. And when you start creating the lines from the edge of the iris, try to push your pencil little more at the beginning and release the pressure gradually to make the edge little more darker.
Then I take 6B pencil and go all over the iris and darken some parts. बिकॉज़ ब्लेंडिंग की वज़ह से जो है शेड काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है, जिसकी वज़ह से मैं अगेन 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ शेड को डार्क करने के लिए। और उसके बाद जो है शेड को ब्लेंड करेंगे सॉफ्ट पेंट ब्रश से, ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें जो है टेक्सचर जो है डिसअपियर नहीं करना है। यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए एंड उसके बाद अगेन लिटिल मोर टेक्सचर इनसाइड द आइरिस एंड देन ब्लेंड इट एंड अगेन हाइलाइटनिंग बिकॉज़ ये सारी जो स्टेजेस हैं चलते ही रहते हैं। अगर आप ब्लेंड कर रहे हो तो उसके बाद हाइलाइटेड करना मत भूलिए। So our iris is ready now and I'm moving on to the sclera and the skin। स्क्लेरा जो है वो प्योर व्हाइट नहीं होता है जिसकी वजह से जो है मैं ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ स्क्लेरा को शेड करने के लिए और कोशिश करें कि ब्लेंडिंग स्टम्प को स्पेशल पीस ऑफ पेपर पर यूज़ कर लें टू रिड्यूस द ग्राफाइट फ्रॉम इट otherwise it will create the smudges on the drawing because in this reference photo जो स्किन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है that's why I'm choosing HB pencil or F pencil to shade the skin area। बिल्कुल लाइट लाइट शेडिंग करेंगे पेंसिल पर इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे अदरवाइज इट विल डैमेज द पेपर एंड और ये चीज़ भी लिमिट कर देगा कि आप इसमें और ज़्यादा लेयर्स शेडिंग की ऐड नहीं कर पाओगे सो बी केयरफुल। ब्लेंडिंग से पहले जो है मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प को स्पेशल पीस ऑफ पेपर पर यूज़ कर लिया है टू रिड्यूस द ग्राफाइट फ्रॉम इट अदरवाइज इट विल मेक द स्किन लिटिल अननेचुरल। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही थी जिसकी वजह से आई मेड अनदर पार्ट फॉर eyelashes। So I hope this video is helpful for you. So don't forget to comment, like, subscribe and share. Bye.